रियासत कर्नाटका में असेंबली इलेक्शंस के करीब आते ही बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को 2B के तहत दिए गए 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है और इस 4% को 2% वक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटीज में तकसीम कर दिया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के मुस्लिम सियासतदानों की जानिब से मीटिंग्स हो रही हैं और चंद उलमा इकराम कांग्रेस के मुस्लिम सियासतदानों के साथ मिलकर इस मसले पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि इसका क्या हल हो सकता है। इस मामले पर कर्नाटका कांग्रेस की जानिब से हिदायत दी गई है कि मुसलमान एहतजाज प्रोटेस्ट न करें, जबकि दूसरी जानिब JDS पार्टी व SDPI सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने वक्कलिगा कम्युनिटी के लीडर से बात की कि वक्कलिगा कम्युनिटी कैसे देखती है बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम को कि जो 2% मुसलमानों से लिए गए रिजर्वेशन को वक्कलिगा कम्युनिटी को दिया जा रहा है। इस सिलसिले में वक्कलिगा संगठन के डायरेक्टर M प्रकाश का कहना है कि उन्हें रिजर्वेशन जरूर चाहिए, लेकिन मुसलमानों से छीना हुआ रिजर्वेशन हरगिज नहीं चाहिए। Vokkaliga community demanded for reservation, higher reservation according to their population. They demanded for 12% reservation. Okay. Now we are not demanded to leave Muslim 4% reservation. 4% reservation given by our Honorable Devagada Sahab, given to Muslim community. They are poor people and they are not. They are economically weaker. We have demanded for high. But we now Vokkaliga community don't want Muslim 4% reservation. We want 12% reservation. Muslims they put Muslims into 10% economically weaker section. They can't compete with the Brahmin community. Muslims can't compete with Brahmins. Brahmins also in economically weaker section. So we are demanding what Devagada Sahab given to minority people 4% reservation. It must be continued. And Vokkaliga community, we are demanding for 12% reservation according to their population. Already Muslims community having less reservation, 4%. So we need Muslims community, Muslim also to increase their reservation. But BJP is squashing the reservation of Muslim 4%. This is very unfortunate. So we are demanding this strike today. Sir, do you think that by the move of this BJP government's move that they are giving 2% to you, would there be a sort of division between Vokkaliga and Muslims? Already they demanded them put Murigoda and Anjagada, they assassinated Tippu. So they are trying to narrative between Vokkaliga and Muslim community. In old Mysore, Vokkaliga community is major. They are Vokkaliga and Muslims are in now they are supporting youth support to JDS. To break this, they are doing all this nonsense. So do you think that the legal options that you are exploring? Yeah, we are. The already election code of model code of conduct has to begin. There is no right to this government. So we will challenge in the court. Thank you. PTV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।